नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सनी साइड अप। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही खास है बिकॉज आई एम सेलिब्रेटिंग अ हैट्रिक विद टुडेज गेस्ट। ही इज एन ओल्ड फ्रेंड एंड माय पहाड़ी ब्रदर अजय जुगरान। नाउ अजय एंड आई go way back to those days when we both started our professional journeys together. While he branched out to start his own law firm later, our Dehradun Pahadi connection kept us in. Somewhere along the way, Ajay discovered his true passion, writing. And I think COVID was his turning point. From scribbling on and off, Ajay finally gave his words a permanent home in the form of his books. His first was a collection of Hindi poems, followed by short stories in English, and now an enchanting collection of haikus. And here's the fun part. When I asked Ajay, did he ever imagine that he will reach this stage of writing a third book? And this is what he has to say. Thank you once again. A third book in. Oh my God. Did you ever think that you'll reach this stage? No, I did not, but once you started interviewing me, I thought I might as well do it. So, yes, it has become our little tradition. Every time Ajay writes a book, he lands up here. And today, I couldn't be prouder to feature him for the third time, celebrating his evolution as a writer. So, let's dive into Ajay Jugraan's world of haiku with this new book, Haiku no Hanataba, right here at Sunny Side Up. क्योंकि मैं भी क्यूरियस हूँ ये हाइकू होता क्या है। Haiku is a form of brief Japanese poetry. Essentially, it relates to an epiphany, a breakthrough, a thought, a moment which you capture, which you happen to observe or receive. And it has the limitation of 17 syllables. So the poem has to be completed in 17 syllables. It need not be rhymed. It is actually unrhymed. And it should follow a 5-7-5 pattern. 5 syllables in the first line, 7 in the second, and 5 in the last. So it should capture that moment, that epiphany, that breakthrough, that observation in the traditional form. It would also have a reference to the season, certain specific seasonal indicator. Like if it was spring, that it might refer to flowers. Yeah, if it was rainy season, it may refer to clouds, things like that, some indicators. But modern haiku has evolved, particularly in English, where people are not bound, are not following that. I have followed the 5-7-5 17 syllable pattern. I may not have followed the indicators part, the seasonal part. I focused more on nature, on birds, insects, my own thoughts, and whatever has come to me as I was taking these walks or going somewhere or just contemplating. So now we've understood what haiku is. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हिंदी के दोहे या फिर उर्दू की शायरी जैसा लगता है, छोटे और गहरे शब्द जो सीधे दिल तक जाते हैं। तो मैंने अजय से पूछा कि वो एक कौन सा पल, एक मोमेंट था जिसने उन्हें इस फॉर्म ऑफ राइटिंग को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया। You're right, there must have been a moment somewhere, right? So that moment occurred pre-COVID. I was traveling to Seattle to meet a cousin of mine and spend a few days there looking out at various things in the city. And I happened to visit the Japanese garden there. So वहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप Japanese Americans का, or maybe some Japanese were also there. They were going around led by somebody, and they were huddled at some point where one of them would read something, or maybe a minute, maybe 2 minutes, maybe 3 minutes most, and they would just nod at each other, and occasionally there would be a aha or a wow or something of that sort, but no clapping, no sound, nothing much. And it was intriguing for me, so I kind of joined the crowd, the audience, to see what was happening, and I observed that they were repeating, everybody was getting a chance. And after this was over, in about half an hour, they were led to a walk, for a walk by the leader of this group. तो वो उनको ले जाके कभी
पानी दिखा रहा है, कभी कोई पेड़ दिखा रहा है, कभी कोई फूल दिखा रहा है, कभी कोई पत्ती दिखा रहा है, कभी कोई चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो वो चिड़िया की आवाज़ की तरफ उनको पॉइंट आउट कर रहा है. एंड देन sometimes he was reading from notes, and sometimes he was I think reading some, preparing something impromptu. And I heard the word from the first time very clearly from his mouth, haiku. And I also saw some pamphlets which they were holding, which had the word haiku written on it. And I got interested. I said, "Yeah, this seems interesting, where people are quietly conducting themselves, not much of conversation, just going around observing." तो मैं घर गया, मैंने गूगल किया, चेक किया कि भाई क्या है ये, तो पता चला हाइकू इज़ अ फॉर्म ऑफ जापानीज पोएट्री. And I then said, okay, let me explore it a bit and see if I can write it myself. तो अब एक सवाल नेचुरली आता है कि जब अजय ने इस फॉर्म ऑफ राइटिंग को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग था इस स्टाइल को समझना, इस स्टाइल में लिखना, क्योंकि उनके लिए भी हाइकू एक न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग थी. Yeah, it was not easy at commencement when we started. And gradually, after I'd written the first 10, first 20, first 30, first 50, I got into the flow of things, at least on the technical part, just to be ensuring that the 17 syllable 575 pattern was followed. Then came as to what exactly am I conveying? Am I just doing technical compliance with no content, or is there content in my haiku? Now that's also a function of somebody else looking at it, what they see in it. But haiku, interestingly, may not be relevant for everybody. Even one reader may view it in a different way, another may not find anything in it. But my attempt was to see whatever beautiful, whatever interesting I could see and capture that in my haiku. So that part of uh, creating a better haiku, not just a technical haiku, is the journey that I am on. uh, I can say it has commenced, but to say that I have mastered it would be wrong. I'm somewhere in the footsteps at the beginning, but yeah, I think some of the haiku that I've written, which has been read by my editor, and somebody else, some other people who have also been mentioned in the book, which they have liked. So I think I'm in the 10% game, 90 okay, okay, 10 just all right. हियरिंग अ राइटर्स चैलेंज वाज वेरी इंसाइटफुल. बट अब मुझे क्यूरियोसिटी है एज अ रीडर, क्योंकि एक नई फॉर्म ऑफ राइटिंग है मेरे लिए. ये मैं कैसे समझूं कि ये एक अच्छा हाइकू है या फिर एक एवरेज हाइकू. एक अच्छे हाइकू को अप्रिशिएट करने के लिए रीडर के पास क्या तरीका है? So haikus are today world over. They are being written in different languages: English, Hindi, Tamil, French, Italian. Haiku is a big, big craze. Yeah, quite a few people want to write haiku and are writing haiku. And one of the easiest platforms where they are publishing their haiku or making it known is the internet, where there are YouTube videos aplenty. You can go. तो आप YouTube पे जाइए, हाइकू लिखिए, आपको मिल जाएगा. धीरे धीरे, as I said, I myself am trying to evolve into something. So धीरे धीरे you will be able to distinguish between good haiku and an average haiku, or a haiku that you cannot relate to, without getting bothered by that. You continue your journey. And of course, जैसे आप ये खोजेंगे तो आपको मास्टर्स भी मिलेंगे, बैशो मिलेगा. You will meet these masters जिनकी एक हाइकू 100 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है ना. ऐसी हाइकू भी है. आपको हाइकू मिलेंगी जो टेम्पल्स पे लिखी हुई है, या किसी के टूमस्टोन पे लिखी हुई है, विच आर रिमार्केबल हाइकूज. And you will meet crazy haikus which will make no sense to you, but they are haiku because it is that person's epiphany, that person's breakthrough. तो आप खोजिए, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है हाइकू सुनने के लिए. जितना आप उसको सुनेंगे, जितना कॉन्टेम्पलेट करेंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये हाइकू में आहा, दिस हैज़ दैट मोमेंट, वाओ, दिस सेज समथिंग.
So when you have this aha, this wow moment, yeah, and you discover it in yourself, the meaning of that haiku, you have arrived in terms of understanding it, and writing it will take obviously some time. तो अजय की बातों से हमें ये समझ में आता है कि हाइकू को अप्रिशिएट करना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर इंसान अपने नज़रिए से, अपने पर्सपेक्टिव से अपना एक आहा मोमेंट पा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो ये किताब का टाइटल हाइकू नो हानाताबा ही एक हाइकू लगता है। अब हानाताबा का मतलब है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। और अगर मैं अपना इंटरप्रिटेशन आपसे शेयर करूं, तो मेरे लिए हाइकू लिखना कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं, एंड हेंस मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टाइटल इज माय आहा मोमेंट। तो मेरा अगला सवाल अजय से यही था कि राइटिंग से लेकर पब्लिशिंग तक की उनकी जर्नी में आहा मोमेंट कौन सा था? वो कौन से मोमेंट थे जब उन्हें लगा कि हाँ, ये सफ़र वर्थ इट था? सो हाइकू हमने तो लिख दी जो भी लिखनी थी, तो फिर हमारे एक परिचित की माता जी ने उसको देखा, और उन्होंने पढ़ने के तुरंत बाद, एक तो उन्होंने शायद सहृदय हैं तो उन्होंने कह दिया कि ये तो प्रकाशित होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं इससे इससे इन हाइकू से मेरा परिचय है, क्योंकि मैंने अपने जीवन का कुछ समय देहरादून में बिताया है। ये वही व्यक्ति लिख सकता है जो देहरादून में रहा है या पहाड़ों में घूमा है, सारी की सारी नहीं, कुछ। तो मुझे ये रेवलेशन, ये बात अच्छी लगी कि कोई जिससे मेरा कोई बहुत गहन परिचय नहीं है, वो हाइकू पढ़ के ये बता रहा है कि ये इसका संदर्भ ये है, इसका भूगोल ये है, इस हाइकू का। सो ये अच्छा लगा। अब थोड़े बहुत कमेंट अमेज़न पे आ रहे हैं, तो उसमें कभी पढ़ के अच्छा लगता है कि लोग किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं। कुछ उसको इंट्रोस्पेक्शन की दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ उसको आत्मसात कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनको पता था है, पर किसी और ने लिख दिया तो ये अब हमारा हो गया। इस तरह से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं ना, जिस तरह से। तो इस तरह की बातें एक दो लोगों से सुनने को मिली हैं। ईश्वर चाहेगा तो और लोग भी कुछ ऐसा अच्छा बोलेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने काफ़ी कुछ कवर किया। कैसे अजय ने कोविड में लिखाई को सीरियसली लिया, फिर पोएट्री से शॉर्ट स्टोरीज तक का सफ़र तय किया, और अब एकदम ही नई तरह की राइटिंग हाइकू को एक्सप्लोर किया। तो दोस्तों, अब मैं ये सोच रही थी कि अजय ने 3 किताबें लिखी हैं, एक हिंदी की पोएट्री, फिर इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज, और अब ये बिल्कुल ही एक नया हाइकू कलेक्शन। 3 अलग अलग एक्सपीरियंसेस, 3 अलग जॉनरास। तो मैंने उनसे पूछा कि इन 3 किताबों में से उनकी फेवरेट कौन सी है। अगर मैं इन 3 किताबों को उनको 3 बच्चों से कंपेयर करूं, तो उनका फेवरेट बच्चा कौन सा है? अब इसका उत्तर मैं फिलोसॉफिकली दे सकता हूँ आपको। तो ये 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे अलग अलग समय पे पैदा हुए। तीनों के समय पे मेरी मनस्थिति और अन्य स्थितियाँ मेरे जीवन की अलग अलग थी या रही होंगी, है ना? तो मैं अलग अलग समय पर तीनों बच्चों को अलग अलग तरह से प्यार करता हूँ। और दूसरा, एक माँ का कथन आपको कोट कर देता हूँ वापस, कि मेरे 6 बच्चे हैं, तो मेरा जो प्यार है वो 1/6 नहीं हुआ, 6 × 6 हुआ, 6 × 6 हुआ। तो ये 3 मेरे बच्चे हैं, मेरा प्यार इनके प्रति कम नहीं हुआ, 3 × 3 हो गया, बढ़ गया है। वाह, आई लव द वे अजय हैज पुट दैट, कि तुम्हारा प्यार 3 से डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ और 9 बन गया। दैट इज सच अ वंडरफुल वे ऑफ लुकिंग एट योर बुक्स, योर क्रिएशन। 3 books later, with multiplied love, I want to ask him, how has this writing experience changed him as a person? What are his reflections of being a writer? Does he look at the world differently now? Thank you for calling me a writer. First of all, to believe that you're a writer it's itself it's a difficult thought for me. I say that I write. Yeah, I try to write. So that's about it insofar as
But in terms of when you verbalize things, yeah, they may not be exact, right? When you discipline yourself to write, you try to be exact. So writing does make you inward looking, in my opinion. Yeah, it makes you contemplate more, because you're devoting time to write. huh? You have to write something which is readable, comprehensible, interesting, hopefully beautiful, hopefully which will last a lifetime and more. And you cannot do that if you're writing superficially. You have to dive. Yeah, just as for pearls, not the artificial ones. You have to dive deep, and rest of the straws, they will float all over. So and you have to take time away from many other things, some unnecessary engagements also. So I'll give you a simple example. I don't watch TV, so which is a big change, because I was a big consumer of TV, right? So my TV is switched off because I need time to write. So that's a change. That's an evolution, if you can say. So I need time for contemplation, for thinking. Then when you write, you do fact checking also. Am I writing something which is correct factually, if you're writing about facts, or if part of your story is about facts, then fact checking, researching that. Sometimes I may write about an insect. Now, I may have observed that insect since my childhood, but I haven't researched that insect to be able to write more intensely about it. So it may be an insect, it may be a bird, it may be a place. So you start researching about those things. Writing haiku, for example, needs you to observe. So you tend to slow down a bit. You don't want to be racing. You look at something, it strikes you, you stand before it, you pause, and you say, ah, this is a visually it is a haiku composed. Now I will carry it back with me. So these kind of changes have occurred. There may be others may be noticing other things. And of course, the other change is that I'm getting interviewed by you and others, for hell bent on making me a writer. तो अभी हमने सुना राइटिंग ने कैसे अजय की सोच और नज़रिए को एनरिच किया। इस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे अपने लिए एक चीज़ डेफिनेटली चेंज करनी है, और वो है मेरा टीवी टाइम। आई एम स्टिल अ वेरी बिग कंज्यूमर ऑफ टीवी। कमिंग बैक टू अजय, मुझे लगता है जब इंसान अंदर से बदलता है तो वो बाहर भी दिखता है और लोगों तक पहुंचता है। इसी से रिलेटेड मेरा अजय से अगला सवाल था, ऐसा कोई फैन मोमेंट जो उन्हें याद है? एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर हिज आंसर। चलिए सुनते हैं व्हाट ही हैज टू से अबाउट हिज फैन मोमेंट। You remember I was visiting you with my last book, The Bridge on the River Song. No, I think the first book, Antarang Satarang, and you were interviewing me. And after the interview, your maid from Jharkhand, do I get her name? Benita was there. And Benita was the one who carried the book, and apparently he was reading it. And from the bottom of my heart, I can say that was a moving moment, because I may have written the book, and some people who claim to be educated or understand things would write, but a person who's struggling, not with you, means you look after Benita, but with a tough life as a domestic help, is finding time to read poetry and is willing to talk about it, come out of that kitchen, help with the shoot, and talk about it. That it was a singular, most flattering compliment that I've ever got on my writing. ये फैन मोमेंट सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और इस बात ने मुझे बहुत टच किया कि इस बात को 3 साल हो गए हैं पर उन्हें अभी तक ये बात याद है। ये ना सिर्फ उनकी ह्यूमिलिटी को दिखाता है,
पर ये भी बताता है कि उनके लिए हर रीडर कितना इम्पोर्टेंट है। और वैसे विनीता आज भी मेरे साथ है। पिछले 15 सालों से वो मेरी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। चलिए इसी इमोशन के साथ सुनते हैं अजय के कुछ फेवरेट हाइकूज उनकी किताब हाइकू नो हानाताबा से। फेवरेट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये चैप्टराइज किए गए हैं या कैटेगराइज की गई हैं, अलग अलग कैटेगरी की हैं, बट आई विल जस्ट रीड आउट अ फ्यू एंड ऑल्सो ट्राई टू जस्ट टेल यू व्हाट इट इज ऑल अबाउट. A pause before dawn. In a medley of bird songs, then the rooster crows. आप देखिए कि अक्सरता हम ये सोचते हैं कि मुर्गे की बांग से सुबह होती है, पर आप पहाड़ों पे जाएं और अगर आप सुबह सुने तो पहले चिड़िया आती है, आसपास के पेड़ों पे पहले चिड़िया आती है, तत्पश्चात मुर्गा बांग देता है. अ पॉज बिफोर डॉन, तो सब कुछ शांत है. इन अ मेडले ऑफ सॉन्ग बर्ड्स, सॉन्ग बर्ड्स आर देयर, द सॉन्ग इज ऑन, दे फॉल साइलेंट, देन द रूस्टर क्रोज, तब मुर्गा बांग देता है. अब इसके विपरीत देखिए हाइकू क्या कर सकती है, उसका भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए. इट कैन ऑल्सो बी अ लिटिल हियर एंड देयर. हाँ, अ बर्ड सॉन्ग वेलकम्स, बड़ा आसान है. द राइजिंग ईस्टर्न ऑरेंज. नाउ द हाइकू एंड्स विद व्हाट? I love orange juice. So it has that twist, yeah, because you don't have to be very esoteric, gyani kind of, but the orange that rises also reminds you of your favorite breakfast juice, yeah. So that is the that's haiku for you. एंड दिस ब्रिंग्स अस क्लोज टू माय कॉन्वर्सेशन विद अजय। पर जाने से पहले क्या आप नहीं जानना चाहोगे व्हाट आर हिज नेक्स्ट प्लान्स? उनके रीडर्स अब नेक्स्ट पब्लिकेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हिंदी पोइट्री तो हो गई, स्टोरीज भी हो गई, और अब एक नया फॉर्म ऑफ हाइकू। तो अब आगे क्या? ट्विंस. ना, तो एक इंग्लिश की किताब अनकैनी स्टोरीज की लगभग लगभग तैयार है, और एक हिंदी शॉर्ट स्टोरीज की लघु कथाओं की किताब तैयार है. और उनमें से अब मेरे को टॉसअप करना है कि इस साल किसको लाया जाएगा इस साल के आखिर तक, तो ये तय करना है, पर इन दोनों में से एक आ जाएगी. Thank you so much, Ajay, for joining me on Sunny Side Up and for sharing these beautiful thoughts with us. और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अजय की ये किताब हाइकू नो हानाताबा नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए. इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, क्योंकि हो सकता है आपको भी अपना एक आहा मोमेंट मिल जाए. लुकिंग फॉरवर्ड टू अजय's ट्विंस बाय द ईयर एंड. और इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई जर्नी के साथ. Until then, stay inspired and look up at Sunny Side Up.